एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? मैं इस वक्त अपने रूम पे बैठी हूँ एंड आई हैव अ मीटिंग कुछ आधे घंटे बाद। सो मैंने सोचा आई हैव दिस टाइम एंड आई वाज ऑल रेडी, सो मैंने सोचा कि थोड़ा सा वीडियो शूट कर लेते हैं। दिस वीडियो was planned like since so long। मतलब मैं हर बार जब भी ट्रैवल करती हूँ मैं तब भी सोचती हूँ कि मैं ये वीडियो ज़रूर से शूट करूँगी, बट हर बार कुछ ना कुछ हो जाता है, मैं बिजी हो जाती हूँ, फिर मैं रूम पे आती हूँ, फिर मैं थक जाती हूँ। सो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे मेरा मन कुछ भी नहीं करता करने का, क्योंकि पूरा दिन इतना बिजी निकलता है एंड मैं बहुत टायर्ड होती हूँ, तो फिर कुछ ना कुछ होके ना टल जाता है। आज आई हैव टाइम एंड क्योंकि मीटिंग मेरी it's in the business center, so I don't have to go anywhere and I just thought कि ये वीडियो फाइनली शूट किया जाए। Anyway, बहुत बातें हो गई, let's get into the video and see what's inside my purse। मैंने कल रात से अपना बैग टच नहीं करा है, so इसके अंदर सब सामान भरा हुआ है and yeah, so I will show you what's inside my bag। I will just sit थोड़ा सा ऐसे कि आप लोगों को दिखाई पड़े। Okay, so this is the bag that I'm using. This is my handbag. Okay, it looks like this and I am obsessed with this bag। अगर आप दिल्ली से हो, अगर आप if you're a girl and if you're from Delhi, you must be knowing about this really good showroom called Stilettos। ये दिल्ली में काफ़ी फेमस है, लाजपत नगर मार्केट में इसका शोरूम है एंड दे हैव रियली गुड कलेक्शन ऑफ bags and footwear, and this is not an ad but I'm telling you my personal opinion। and उनका नया शोरूम खुला है कानपुर के Z Square मॉल में and I was just shopping right before this trip and I went to this showroom Stilettos in Kanpur and I loved this bag, so I bought this। I'm using this as of now। It's a very nice bag and it looks like this। ओके, सो सबसे पहले ये दिस इज अ सैनिटाइजर। इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर आवर ओन सेफ्टी। सो मैं सैनिटाइजर के बिना नहीं निकलती हूँ। मैं पहले भी कैरी करती थी बिफोर द पैंडेमिक हैपेंड एंड एवरीथिंग, बट आई थिंक अब तो नेसेसिटी है। सो येस, दिस इज द सैनिटाइजर दैट आई एम यूजिंग। आई जस्ट शो यू। इट्स फ्रॉम मिनीसो एंड it's the flavor is lavender and it smells really good, and lavender is my favorite fragrance, so I love this one। So this is here, it's always hanging। Next, let's open। okay, this is the wallet। so जब मैं छोटा बैग लेके यूज करती हूँ तो मैं ये हैंडी सा वॉलेट रखती हूँ। जब मैं बड़ा बैग लेती हूँ, like the big the huge bag that you must have seen in the photos and videos before, जो vlog वगैरह में भी आपने देखा है पहले, so उसके लिए मेरे पास थोड़ा और बड़ा वॉलेट है। That's of Charles and Keith and this is also from Accessorize। I got this, so it has the money and the cards and a band-aid just in case of emergency, and my driving license and Aadhaar card and everything that you require। So this is the most important thing in my handbag। I'll keep this aside। Next up is power bank। it's very important। Apple users समझेंगे मेरी बात को, मेरे दुख को क्योंकि बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन होती है। I mean, and obviously I'm clicking pictures, making videos, short clips, then there are so many calls to attend, so have to keep the power bank। कॉर्ड भी रखती हूँ, बट कॉर्ड मैंने बाहर निकाला हुआ है फ़ोन चार्ज करने के लिए। सो the handbag। then there's a scrunchie just in case I need to tie my hair। so yeah, it's a girl's handbag। you have to expect such things coming out of it। Aadhaar card, okay। then I have some cosmetics। this is a compact that I carry। it also has a mirror and I really like या तो MAC। मेरे पास दो कॉम्पैक्ट हमेशा रहते हैं। एक मेरे वैनिटी बैग में रहता है जो कि अलग रखती हूँ, एंड वन इज दिस फॉर द हैंड बैग। सो दिस इज Lakme 95 flawless matte complexion compact and really like this one, and it stays guys, so it's good। then I have some bills
a lot of papers inside. Mask. So मेरी आदत है मैं जब भी रूम पे या घर पे पहुंचती हूँ मैं मास्क उतारती हूँ, मैं अपने बैग में रख देती हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम जल्दी में होते हैं और हम निकल जाते हैं और मास्क नहीं याद रहता है. सो फॉर दैट आई ऑलवेज पुट द मास्क इनसाइड द बैग सो दैट मैं बाहर निकल जाऊँ और अगर मतलब मुझे कोई टेंशन ना हो मैं निकलते ही मास्क पहन लेती हूँ. सो यार when I come back I always keep the mask inside. So this is the mask. Then a diary. Obviously I'm a writer and a creative mentor, so मैं हमेशा एक डायरी कैरी करती हूँ to make the notes and everything. And with diary you can expect a nice pen. So I love collecting pens and I'm very specific about my pen. So I have been using this model Pericardian का really long, मतलब मैं बहुत सालों से, ये खत्म होता है मैं फिर से इसको खरीद लेती हूँ. I really like this. It's a very sleek pen and you know twist to open and close. Very handy, looks very nice. So this is the pen that I always keep. Then a spray mint just in case you want to. I love this. Then a lip balm. So I don't carry lipsticks more often. ज़्यादातर मैं lip balm रखती हूँ क्योंकि I'm not the kind of a person जो बहुत ही ज़्यादा मेकअप पहनना पसंद करते हैं. And this is a lip balm. Right now I'm using it's of My Glam, but usually I keep Baby Lips or Lip Love from Lakme. This is another thing that I'm obsessed with. It's the perfume and it's really nice. I got this one from Miniso, although I have so many. This is called Sparkle Pink Snow Mountain. I think I got it for 350 or something. But हमेशा, not just talking about this one, but हमेशा मेरे handbag में एक perfume आपको ज़रूर से मिलेगा because I'm obsessed with that. So yeah, I like to smell good and it helps when you enter a place and it's not that it doesn't smell that good. I hope you're getting. So that time also you can use it. The bill. Then a small hanky. इसलिए एक मीम देखा था, ये वही हैंकी है. मैंने इंस्टाग्राम पे एक मीम देखा था, उसमें था कि ये हैंकी हर उसमें पाया जाता है, हर आंटियों के पर्स में पाया जाता है. Not an auntie, but yeah. Some change, guys. Very important. Then my AirPods. So yeah, this is it's very important. So I always carry that. और क्या बचा? Done. This is it. This is in my handbag. And yeah, मैंने सब खाली कर दिया. Nothing is inside now. वो आवाज़ खाली चिल्लर की आ रही है. So yeah, I really hope you like this video. बहुत डर के मैंने ये वीडियो बनाया है. मतलब डर के नहीं, but yeah, I was kind of nervous कि बनाऊँ कि ना बनाऊँ. बट मैंने YouTube पे थोड़ा सा सर्च करा. मैंने सोचा कि लोग बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, लोगों को देखना पसंद है कि नहीं पसंद है. So I was a little dicey about making this video, but then I searched on YouTube and there were so many people who shared what was inside their handbags. So मैंने सोचा बना ही दिया जाए. Now it's all yours. Show your love, like, comment and share if that's possible for you. नए हो तो subscribe कर लो. Because I post a lot of travel vlogs, updates about my books, and you can take a deep dive into an author and a creative professional's life and lifestyle if you like that. So yeah, I will talk back soon in my next video. I really enjoyed watching I really enjoyed making this video, shooting this video, and I will talk back soon in my next video. Till then, take care and bye.